हाय वेलकम बैक टू स्त्री अनफिल्टर्ड। मैं हूँ विजेता और आज मेरी जो बेटर हाफ है स्त्री अनफिल्टर्ड की, दैट्स महिमा। बट हमारे साथ आज जो है उनका नाम है रजनी लालचंदानी। शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड भोपाल और अभी फिलहाल वो बॉम्बे में है। बहुत कमाल की चीजें कर रही हैं अपनी लाइफ के साथ, जैसे कि एक बहुत अच्छा, बहुत ही स्टैब्लिश्ड करियर, साथ में फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक लड़की है। और ये किस तरह से मोटिवेट कर रही हैं हमारे आसपास की जो औरतें हैं उनको, वो आपको भी जानने को मिलेगा। सो बात करते हैं। हाय रजनी, वेलकम टू स्त्री अनफिल्टर्ड। Hello, Vijeta, and my VJ. That's what we call you. Thank you so much for having me. ऑलराइट। सो रजनी, सबसे पहले तो लाइक माय ऑडियंस टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, लाइक हाउ इट वाज, बिकॉज़ व्हाट आई नो इज यू कम फ्रॉम अ लिटिल कंजर्वेटिव सिंधी फैमिली। सो हाउ वाज इट? Yes, you called it right. I am a Sindhi, a proud Sindhi, and I come from a city known as Bhopal. But उससे छोटा मत कहो यार, भोपाल हमें बहुत प्यारा है और ऑफ हमारे लिए वो कोर्स। हमेशा ही सबसे नजदीक रहेगा। ओके। बचपन से लेकर टिल द टाइम आई मूव टू मुंबई, यस मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। आई ऑलवेज स्टेड इन अ फैमिली जहाँ पर हम कम से कम 11 से 12 लोग हमेशा रहते थे। So राइट। Bachpan has been always surrounded by a lot of people, lot of love and a full clan. A huge shift जहाँ बचपन में फैमिली के साथ पले बड़े हैं, यहाँ पर अब बॉम्बे में ऑपोजिट है। आई स्टे विद माय फैमिली, माय हस्बैंड एंड माय चाइल्ड। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ शिफ्ट। बचपन इसलिए कभी कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा याद आता है। दैट वाज फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल के बारे में अगर बताऊं तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। I studied in a co-ed school जहाँ पर बहुत सारे the entire mahol was in a certain way that there was quite equality. We did not face so much of kind of discrimination जो हमने तब भी काफी राइट। सुना था, आज भी हम काफी सुनते हैं. But वाओ। I definitely belong to a family which was a little conservative if I see from the families that my friends had. घर या। में बॉयज का आना अलाउड नहीं था। अगर ओह। मेरे क्लास के किसी बॉयज को मेरे घर में कुछ नोट्स लेने भी आना होता था तो उन्हें सोचना पड़ता था कि कहीं रजनी के दादाजी तो दरवाजा नहीं खोल देंगे. ओके। Dadaji सो was quite famous in my entire family. Yes, it was. They were protective. They had their own ways of protecting their girl child, but that's what how it was. राइट। अंधेरा होने के पहले definitely घर आना ही पड़ता था. I'm very thrillड to share one of the memories since we are talking about my दादाजी. या। वो नहीं चाहते थे कि मैं गाड़ी इतनी जल्दी उम्र में सीखूं. उन्हें डर लगता था कहीं गिर जाएंगे बच्चे, लड़की है, कुछ तकलीफ ना हो जाए. मेरे दादाजी एक लूना चलाते थे. वो ही वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल. वो एक लूना चलाते थे और जब ओके। शाम को वो ऑफिस से वापस आ जाते थे तो 5 बजे के बाद चुपके से उनकी लूना लेकर मैं निकल जाती थी और दूर जाकर उसे स्टार्ट करती थी क्योंकि वो लूना बहुत आवाज करती थी. आवाज करती नाउ थी। आई हैव लर्न लूना एंड गाड़ी. जहाँ सबको इतना फियर होता था दादाजी का, वहां पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के लूना तो सीख ली थी. So shall दिस I इज put it this way? You were a little rebellious, a little. नॉट रिबेलियस बट आई वाज वेरी रेजिलेंट कि मुझे करना है. Okay, that's और great. दादू को पता चलेगा तो देख लेंगे, दादू को समझा देंगे, मना लेंगे, वो मान जाएंगे. Great. Nice. Yes, this is how my So, childhood was. In terms of my school, बहुत ज्यादा ग्रेड्स नहीं अच्छे आते थे. पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी मैं, पर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में एक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता था. बी इट डिबेट, बी इट डांसिंग, बी इट सिंगिंग, चाहे डांस खुद करना हो या एनुअल फंक्शन में पूरी क्लैन को डांस सिखाना हो. ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता था. तो थोड़ी सी आगे थी करिकुलर एक्टिविटीज में, डांस स्टडीज. so this went up till you got into college, and there also you were holding a position that was. Yes, school में जिस तरीके से I was, you know how we had elections in school after 10th 12th standard. I used to be cultural minister for a lot of years, like almost for 3 years, Wow. 10th 11th 12th. That went to college, I was a cultural minister in college also. There was one some kind of a knowledge come beauty show in college where I was also crowned as Miss Confident. I won that and I was crowned as Miss Confident. There were a lot of pictures in newspapers. उसको बहुत flaunt किया था. That was the first mobile phone I ever got as a prize. As a It was such a prize. small as Wow. a prize, and it was वो mobile phone आज भी मेरे पास है, and that's a prize possession. Great, very nice. So this was your childhood, which was, I think, very quite colorful. कि थोड़ी strictness भी घर पे देखी, बाहर जो करना था वो किया,
And I think till date you are like that because I see a lot of zeal in you. Beat anything. So let's come to one thing जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में रहती है कि भाई लड़की है तो एक टाइम पे शादी भी करवानी है. तो how was that part? Because how did that happen? And I think you got married quite early also. उसके बाद एक सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर भांडा फूटता है वो ये है कि भाई where's the kid? Yes. And I really want to highlight this part कि how did you manage these 8 years, like managing both the families, like your family and your husband's family, that उनका ये जो सवाल था where's the kid वाला, तो how did you manage these 8 years? इट्स अगर शायद मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए कैसे कैसे किया, बट कुछ हाइलाइट्स शेयर करना चाहूंगी. Sure. मेरी फैमिली ने मुझसे कहा था कि मतलब जो मैं समझती थी कि वो मेरे लिए ग्रूम देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके चूज किए हुए ग्रूम से शादी करूं. दैट्स हाउ एन अरेंज मैरिज वर्क्स. बट दे वर वेरी सपोर्टिव द मोमेंट दे देयर वाज वन थिंग व्हिच आई हैड ऑलवेज टोल्ड देम दैट शादी किससे करनी है वो हम दोनों डिसाइड कर लेंगे, आप और मैं, बट शादी कब करनी है प्लीज वो मुझे डिसाइड करने दीजिए. ये उन्होंने रिस्पेक्ट किया बिकॉज दे यूज्ड टू से कि लड़का ढूंढने में टाइम लगता है, लड़का मिलने में टाइम लगता है. एंड आई यूज्ड टू टेल देम व्हाट इफ अगर पहली बार में जो मिल गया वो भी पसंद आ गया तो फिर तो मैं फंस जाऊंगी ना, मतलब मुझे टाइम नहीं मिलेगा. तो आई नेगोशिएटेड देयर. बट लेट मी टेल यू, जो पहला बंदा मिला, जो पहला बंदा जिससे बात करी उसी से शादी हुई है. सो Wow. आई टुक टाइम एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल देम दैट सी मम्मी, मैंने कहा था ना कि पहले से मिल गया और उसी से शादी हो गई तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू बाय टाइम. Right. It was a very beautiful period in terms of my career. You are right that I was always very very career oriented. Bhopal being a small city, I could not explore too much in the profession that I Right. am today. So after getting married, coming to Bombay, I always had this thing with my husband, and he was extremely supportive. He's always been like equal that Yeah. you do whatever you want in terms of what your career goal is. I'm with you. And yes, Great. after Shadi, the moment we have this 1 or 2 years of time where the family starts getting into this question, okay, what's the plan? I felt only one thing always, which I believed in, and I continued that. कि अगर आपका जो गोल है, आपके जो अगर करियर गोल्स हैं, आपके पर्सनल गोल्स हैं, अगर आप अपनी फैमिली को कम्युनिकेट कर देते हैं, उन्हें समझा पाते हैं, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है. यू शुड नॉट रन अवे विद दोस क्वेश्चंस. Wow, my that's my great. in-laws family, they were extremely supportive. Yes, they came back with that question after some time always, but I told them what do I want to do in life. I always told them that my career is very important for me. I want to balance both the things. The moment मुझे लगेगा मैं mentally, psychologically, physiologically, financially prepared हूँ, मैं definitely ये step लूंगी. I also want to go a family after some time, and I did that. After 8 years of spending time with my family, with my husband, I felt that now is the time that we should think about a family, and I have a 2.5-year-old kid today. Wow, that's great. And he's so cute. He's lovely. So Rajni, one more question I have. Like to put some light on your career growth. How did you start it? Because you did your MBA. After college, you did your MBA. That was in HR. How was that part? And what all challenges did you face? Like being a woman, did you face any challenges or struggles? Did you like, if at all, there were any struggles? The struggle started at home in terms of beginning a career. Mm-hmm. So after my graduation, we had this campus placement, and I got selected in a BPO. It was in Pune. Right. That was the first thing I achieved immediately after my graduation. But because घर से बाहर जाने की बात थी, just at the age of 21, of course my grandparents did not allow. I again say that it was their method to protect their child, but career नहीं start हुआ उस समय. Then I thought, okay, let me do MBA. कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे. MBA colleges, I went through the studies, and when I got these colleges जहाँ पर हम exams देते हैं, मुझे बॉम्बे के कॉलेज, बैंगलोर के कॉलेज और कुछ एक हैदराबाद के कॉलेजेस से जहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा था, मैंने वो रिक्वेस्ट आके रखी कि अब मुझे पढ़ने तो जाने दीजिए. बट मैं देखती हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए भी इंसिस्ट किया जा रहा था कि मैं भोपाल से ही पढ़ लूँ, भोपाल में भी अच्छे कॉलेजेस हैं. तो वहां पर भी एक स्टेप बैक लिया. ओके, यहाँ के कॉलेज भी पढ़ लेते हैं. वो जर्नी कंप्लीट हुई, बट तब तक मैं समझ गई थी कि शायद मुझे अपना करियर
तभी प्रोग्रेस करने मिलेगा जब शायद मुझे ये लोग अपने हिसाब से विदा कर देंगे, खुशी खुशी विदा कर देंगे. So then I I said, get it. okay, this. I finished my college, I finished my MBA, I did a little bit of work in Bhopal. I also Right. had a very fruitful journey of being an entrepreneur for almost 1 year. I started my own Wow. soft training institute. Oh, right. That was also something I Uh-huh. did. So it was very fruitful. I did that, and when I came to Bombay, that's where the actual struggle started. Because Uh-huh. आप एक एज पे हैं जहाँ पर, because बॉम्बे में करियर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं. चिल्ड्रन आर वेरी आउटगोइंग इन टर्म्स ऑफ बिगिनिंग देयर करियर इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज. सो Right. जब मैं देखती थी मेरे एज के जो लड़कियां थे वो ऑलरेडी मुझसे काफी आगे थे. तो एक इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं कब पहुंच पाऊंगी, जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं कब फुलफिल कर पाऊंगी. But the only thing which I had held in my mind that every opportunity that comes to me, I have to give my 1000% to it. I Wow. did that. I gave my first interview in Bombay and I got through. I spent 6 years in that first company, and it was an amazing experience. I started as an HR executive, and I was there when I became a director. After that, I had resigned from that company. It was Wow. 6 years then. And in my current company where I'm working, I'm at a very good position, having a large team, doing a lot of good work. आगे बहुत काम करना है, पर ये स्ट्रगल्स रहे हैं. पर मैं समझती हूँ कि अगर आपने सोच के रखा है कि आपको पीछे नहीं देखना है, रुकना नहीं है, तो हो जाता है. Wow, that's amazing. And I have known you like this amazing enthu girl जिसको मतलब जिसने कुछ सोच लिया तो उसे करके ही दिखाना है. And your journey says all of it. बताओ कि जब अपना करियर शुरू किया, मतलब एक छोटे शहर से बॉम्बे में अपना करियर स्टार्ट करना, were there any challenges being a woman? Vijayata, many times I feel, that I'm a God's child. बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पर ये जो स्ट्रगल्स मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग फेस करते हैं, मैंने इतना ज्यादा उन स्ट्रगल्स को फेस नहीं किया है. I have been lucky, or I have chosen a right path. I don't know where is the difference, or what is the thing which There's a defines thin this for line, me. yeah. But definitely I have never faced discrimination, because I always felt that the competition is within me. I got my first job, the first interview I gave, I got that job. Hamari company mein we had 90% women. Wow, that's great. The first company that I worked with, there were 90% women. And more than having a competition between a man and a woman, the competition is more when there are so many girls around. So that's Yeah. the competition we had, which was even more. I spent 6 years there in that one company, but I don't think I faced any kind of gender discrimination there. Wow, that's I great. also feel that at the beginning of the career, that kind of discrimination is generally low. I would not say take the word discrimination, but जो कोई competitive spirit होता है, Competitive spirit, correct. वो जब आप ladders चढ़ते जाते हैं, तो आपको वो सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलना कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है. जब आप इनिशियल स्टेज ऑफ करियर पे रहते हैं तो लोग आपको काफी सपोर्ट करते हैं. ये मैं अभी देखती हूँ जब मैं नाउ दैट यू आर ग्रोइंग टुवर्ड्स लैडर, अब जो एनकरेजमेंट होता है वो बहुत चोजन लोगों से आता है, हर किसी से नहीं आता है. Okay, that's nice. So Rajni, करियर ग्रोथ के बारे में तो बहुत कमाल की चीजें बताई, एंड नाउ यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन वेयर यू आर काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद द करियर ग्रोथ. I'm way too content. Great. Way towards content. Right. So, एक और एक सवाल मेरा है वो ये कि now you have a kid who is 2.5, who's very cute, who's like very intelligent, just like you, as far as I know him. So how do you manage him, your work, your घर बार? अकेले मैनेज करना मैं नहीं कहूंगी कि कर लिया सब कर लिया. हाँ. कर लिया क्योंकि करना पड़ा. सब हो जाता है, but if you really ask me, was it difficult? Yes, it was. So I did not take any break after my delivery. Pregnancy. I was working just before 3 to 4 days. Just there were 3 to 4 days that I delivered. तब तक मैं काम कर रही थी. And I took my maternity break exactly 6 months. जैसे ही break finish हुआ, यान 6 महीने का था और मैंने अपना काम resume कर लिया था.
Okay. One thing which where my organization, my boss, my super boss supported me, that they although it was a COVID period, but still हमारी company में लोगों ने office जाना start कर दिया था, because कर it दिया was था. that time. Right. But they supported me because I had a child. They supported me with a little longer period that I continued working from home. So Nice. I started having help at home. And she used to be with Ayan, जो Ayan मेरी नजरों के सामने ही रहता था 24/7, but at least मेरे सामने था कि कोई उसको मेरे सामने all time देख रहा है. So I had that. And 6 months baby is a very small baby. You have to feed the I child know. almost every 2 hours. So it was difficult, but मैनेज करना पड़ा, क्योंकि काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, थोड़े भी समय के लिए नहीं. वो मुझे हमेशा से लगता था. और आई थिंक बच्चा होने के बाद ना आप में एक पावर और एक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिकॉज यू नो दैट नाउ यू आर नॉट ओनली डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर अनदर पर्सन आल्सो हु इज इन योर फैमिली, इन योर लाइफ. It was difficult because I almost gained 20 kgs during my pregnancy. So weight was also an issue. So you have to manage your weight. You have to ensure that you're also consistently shredding your weight to take care of your child better. Right. You don't get into any kind of health complication. वो सब manage करना. So yes, difficult था. जैसे तैसे एक step लिया. I had a full new team. I had a new role. क्योंकि मुझे घर से काम करने की इजाजत थी. मेरा काम थोड़ा बदल गया. मेरा काम completely नया था, नई team थी. But मैं ये भी बताना चाहूंगी बेटा, that was the first year after completing I got my first promotion in this company. Wow. So, Wow. I could manage somehow. बहुत मेहनत करी और हो जाता था. मुझे लगता था difficult है. There used to be days where I used to feel low. कभी-कभी strength मिलती थी, कभी-कभी अच्छे दिन, कभी-कभी low days, but manage हो जाता था. That's great. First promotion जब मिला तो उसके बाद लगा यार कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं. Absolutely, और तुम कर ही रही हो. Now I would really like to come on your fitness part, Rajni, because I have been seeing you a fitness freak from some time now. So what is this new obsession? Maybe I don't know. Should I call it an obsession? But yeah, I see you as a fitness freak. How do you manage this now? Your fitness regime, your kid, your work. How do you go about it? You know, Vijayata, my father, he is one of my biggest inspiration when it comes to fitness. Really? It is no less than 20 years now that I've seen my father doing a morning routine of yoga, pranayam, and a daily walk. It's 20 years now. Right. मैं बचपन से ही ना, I have always been a child who was at a little chubbier side. तो मैं थोड़ी सी overweight नहीं कहूंगी, पर थोड़ी सी चबी हमेशा से ही थी. जब मैंने फाइनली प्लान किया था कि अब मुझे फैमिली वे जाना है, मे बी अनदर 6 months, 1 year or any time soon now, that's where the first time I started taking my health very seriously. Because I know that I have a habit and I have a heredity where I may gain weight a little faster than anybody else may do. It is a possibility that I may go very high on weight after my child arrives. So that's where I thought, okay, let me go back a little, let me work on my fitness. मैंने करीबन 10 से 12 किलो अपना वजन 2019 में रिड्यूस किया था, तब भी काम के साथ साथ ही किया था. एंड आई हैड अ वेरी हेल्दी डिलीवरी, आई हैड अ वेरी हेल्दी बेबी. दैट्स व्हाट हाउ इट हेल्प्ड. तो जब देखा है वो पूरा जर्नी, और आपको जब एक बार चस्का लग जाए ना फिटनेस का, विजेता, वो जाता नहीं है. वो एक चस्का मुझे लगा that on your face. That's great. अभी 2 साल हो गए हैं. वो जो 20 kgs मैंने पुट ऑन कर लिया था, वो मैंने अब सब श्रेड कर दिया है. अब माइनस होता है, चली गई? नहीं अभी this is also I'm way too content. जर्नी बहुत है, बहुत लंबी है फिटनेस की भी, पर हाँ, फिटनेस अब एक शौक है. इनवेरिएबली वो अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ तो मेरी डाइट पे मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि मैं कभी भी कुछ जंक फूड नहीं खा रही हूँ. कोशिश करती हूँ हमेशा घर का खाती हूँ. थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, बट that's something which is with my interest. मतलब वो मेरा पैशन बन गया. And does Ayan also follow that? हाँ, वो मुझे कॉपी करता है. कभी कभी मैं अगर कुछ अपने वेट्स उठाकर यहाँ पर लाके रखती हूँ, तो अगर मैं कुछ वेट्स कर रही हूँ तो वो अपना वेट भी मेरे ऊपर लाकर करने की कोशिश करता है कि मुझे भी उठाओ. Great. But he is also, let me tell you, this works now. शायद मैंने जब उसको अपने साथ लेकर डांस किया था ना प्रेगनेंसी के पहले, वो अब मुझे डांस करा रहा है.
क्योंकि वो एक touch wood, he is a super active child, and he likes to be active all over. So रजनी, बहुत मजा आया यार बात करके, और बहुत मोटिवेशन में मिला. हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ, that's a great motivation for so many women around us. So what's your message to our listeners who are as of now seeing this amazing interview? um, Everybody around, I think especially for women, you know, health is one thing which I feel that everybody should prioritize. लाइफ में बाकी सब कुछ दोबारा रीबिल्ड हो सकता है, बट अगर आपकी हेल्थ अगर थोड़ी पीछे चली जाती है तो वो रीबिल्ड करना बहुत बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, फाइनेंशियली भी, और आप लाइफ में बहुत ज्यादा समय पीछे चले जाते हो. ये मुझे लगता है कि एक चीज लाइफ में हम सबको हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ही करना चाहिए, खुद को, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. प्लीज डोंट नेगेट द थॉट दैट अगर आप बहुत समय तक लो फील कर रहे हो तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इट्स जस्ट सर्टेन हाई डेज एंड लो डेज. नो, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट दैट वेदर इट्स जस्ट अ लो डे or there's something else leading to it. So you should definitely take care of yourself, mental health and physical health both. This is on the health side. On the other side, I feel that guys, leadership is one trait that is in most demand. You go to any strata of life, whether you are running house, whether you're outside in a profession, whether you are in any kind of career, personal, professional, everything. If you're a leader, I think you are having a great responsibility and you're following the right path. There are so many people that you inspire. And I think that's one inspiration every other women should try and bring in themselves. This is very necessary. खुल के जियो, बाकी सब कुछ हो जाता है. Great. So on this note, I would really like to thank you once again, क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया आज और अपनी एक बहुत ही बढ़िया और मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करी. एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, एक स्ट्रेंथ, एक मोटिवेशन मिलने वाली है. सो थैंक यू सो मच रजनी फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन स्त्री अनफिल्टर्ड. Thank you so much for having me, Rosetta. Thank you. And you guys don't forget to subscribe our channel, and also if you like this episode, please do share it with your folks and friends. Stay tuned to Stri Unfiltered. Thank you.